Good evening students, welcome to Edulux Rank Up classes and I am again Ekta Soni for your science. हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है. सो सॉरी फॉर गेटिंग लेट, आई हैव जॉइन लेट हियर सिंस देयर वाज अ टेक्निकल इशू. ठीक है, क्लास रन होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. सो ऑल आर कनेक्टेड हियर. श्रेया, सक्षम, तेजस्व, अथर्व, युवराज, अदिति, अदिति कुमारी. Okay, fine. Aditi Kumari, if you have joined me, then I want to inform you that I have added your number, right? I have added your number over WhatsApp. So you are Aditi Kumari, right? I have saved your number as Aditi Kumari. So I was like कि मैं थोड़ा सा confuse हो रही थी, ठीक है, अदिति और अदिति कुमारी में. So एक बार check कर लेना. Hi Aditi Kumari, good evening. Please check your number that has been added to my WhatsApp, right? एक बार उसे चेक कर लेना कि आपका ही नंबर ऐड हुआ है कि नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अदिति का नंबर ऐड किया है, ठीक है. तो एक बार देख लेना इसे. चलो ठीक है, हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी हैव न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये हमारा बायो का चैप्टर है, राइट. सो वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव न्यूट्रिशन हियर. जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, fine. I'm back here, right? Okay. So we have our chapter that is nutrition first here. And what do you mean by nutrition? सबसे पहले ये बताओ कि nutrition क्या होता है. What do you mean by nutrition here? So nutrition is a thing. Nutrition is like you have all of the important components to survive your life within the body. ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करोगे, that is a part of nutrition. ठीक है, it means that if a man is getting nutrition, if you are full of all nutrients, right? So what are you getting then? You are getting food and you are getting a balanced diet more than a food. ठीक है, खाने से ज़्यादा क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आपको फूड सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है बैलेंस डाइट. एंड इन दैट बैलेंस्ड डाइट यू आर हैविंग विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड वाटर, राइट. तो जब ये सारे कंपोनेंट्स आपके खाने में होंगे, इफ़ यू आर हैविंग ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन योर फूड, देन यू आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स एंड दोज न्यूट्रिएंट्स विल बी गिविंग यू एनर्जी एंड अ लाइफ टू सस्टेन. ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे. गुड श्रेया, दैट इज प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग टू ऑब्टेन एनर्जी. गुड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ the components that are present in your food. So we have the definition here, the process of utilization of food by living organisms to obtain energy for their growth and development is known as nutrition. So, right, so we have here the purpose as growth and development. So purpose of nutrition is growth and development of living organisms. ठीक है,
ग्रोथ और डेवलपमेंट किनका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट. Now we have importance of nutrients. We have importance of nutrition. So first is to get energy. We obtain energy. We obtain energy to sustain our life. We proceed towards the development of our body. ठीक है, हम अपनी बॉडी के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं. वी हैव दैट एनर्जी सो दैट वी डू ऑल आवर डेली वर्क. ठीक है, अगर आपको खाना ना मिले, लिसन, इफ़ यू हैव नॉट डन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह को नाश्ता नहीं किया, बस आने वाली थी, है ना, और बहुत सारा होमवर्क हमने ऐसा फैला रखा हुआ था, सो जस्ट यू कलेक्टेड ऑल, पुट इन द बैग, राइट, एंड यू जस्ट रन अवे. ठीक है, जल्दी जल्दी भाग गए, यू हैव टू कैच अ बस, एंड यू डिड नॉट हैड योर लंच. ठीक है, अपना लंच नहीं लिया आपने, अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया आपने, राइट. अब आपने अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो सोचो कि लंच का टाइम आने तक क्या करेगा, क्या क्या लगेगा, बताओ. एवरीवन हैव गॉट दिस फील और नॉट? मेरे को तो मिली थी बचपन में. ठीक है, आई वॉज इन महर्षि स्कूल एंड आई जस्ट डिड दैट इन ऑन वन डे. On one day I was having my project file and I just missed that project file. So I get back to home, got that project file and just forgot to have breakfast. तो जब तक लंच आया ना तब तक तो पेट में चूहे कूद रहे थे मेरे. बाप रे, कैसा दिन था वो मेरा ना. Yeah, Shreya, I got so much weakened. At that day ना, it was like कि कब आएगा लंच का टाइम, कब आएगा लंच का टाइम, कब मैं खाना खा लूँगी. I was feeling sleepy, I was feeling loss of energy, I was not even energetic although. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल energetic नहीं थी, ख़त्म हो गई थी बिल्कुल. ठीक है, and whatever the teacher is saying, I'm like मैम lunch, मैम मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाना है. ये सारी दिक्कतें हो रही थी उस दिन, है ना. So if you have not taken the nutrients, then how will you get energy then? ठीक है, एनर्जी कैसे मिलेगी फिर अगर खाना नहीं खाओगे तो इसीलिए न्यूट्रिशन का जो पहला इंपॉर्टेंस है, दैट इज फॉर योर ब्रेकफास्ट, फॉर योर एनर्जी पार्ट एंड फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, राइट. नेक्स्ट इज दैट it repairs the damaged part and organs and proteins help in this. ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है to join all of your damaged parts and organs, right. जैसे आप हैं, बहुत सारे blood cells होते हैं, they every day die and then regenerated, right. So they are getting regenerated just because of these nutrients. They absorb nutrients from the food, right. ब्लड क्या करता है, हमारा जितना भी हमने खाना खाया है, इट इज़ एब्जॉर्बिंग दोज न्यूट्रिएंट्स. दिस इज हाउ मेडिसिन्स वर्क. ठीक है, मेडिसिन्स भी ऐसे ही काम करती हैं. लाइक इफ़ यू वर हैविंग हेडेक, राइट, यू वर हैविंग हेडेक एंड यू जस्ट टुक अ पिल, राइट, सम काइंड ऑफ क्रोसिन और डिस्प्रिन, राइट, है ना. तो इस तरीके कोई आपने मेडिसिन ली एंड देन यू बाय आफ्टर टेकिंग इट बाय आफ्टर 10 minutes or 15 minutes, then you realize that is like slowing down, right. You feel sleepy, you feel dizzy, right, and you get like कि अभी मेरे को सो जाना है and that pain will go off. So after half an hour or after right 3 to 4 hours, you will be getting like your pain is just went away. ठीक है, सारा पेन चला गया है. How did that worked? ठीक है, वो कैसे कैसे काम किया है वो, तो उसने ऐसा काम किया मेडिसिन ने. Just you took medicine, you were having some nutrients within the body, right, and you were having blood cells, so that blood actually sucked that composition from the pill. ठीक है, उस pill से वो composition लिया और उसको सही जगह पे पहुंचा दिया where it was required. It was required overhead, तो वहाँ पर जैसे ही पहुंची उसको ठीक कर दिया. So this is a part of nutrition that is done here. हाँ सक्षम, ट्यूसडे को ऐसा हो गया था. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, है ना. हम लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब भूल जाते हैं कभी कभी. क्यों डिनर नहीं भूलते होगे ना, ब्रेकफास्ट भूल जाते होगे या जल्दी जल्दी में कर नहीं पाते होगे, ये ज़रूर हो सकता है. ठीक है ना. So now we have another thing as living organisms here. So what are living organisms? Plants, animals and all the decomposers are counted as the living organisms. Other than these, other than the plants, animals and the decomposers, we have left with land, air, water, atmosphere. Everything is non-living, right. So first we have to focus over living organisms. They have the ability to survive and exist. Only living organisms survive and exist here.
ठीक है ना, यही सर्वाइव करेंगे, यही एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम समवेयर और आइदर दे आर क्रिएटिंग देयर ओन फूड. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, राइट. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, right. They make their own food by the process of photosynthesis. And now we have other consumers as animals and the human beings that are dependent on these green plants for their nutrition. They will get food from these green plants. Who? The human beings and the animals. The human beings and the animals. They will get food from these green plants. So if they are getting their nutrition from these green plants, then they are dependent on their for their food on the green plants. ठीक है ये बात. तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ. तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स भी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स भी जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. सो अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सी दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हियर. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है ना, चलिए हम देखते हैं. यस सक्षम, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स. प्राइमरीली वी आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर अवर फूड, राइट. वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर अवर फूड. वी आर omnivores, है ना, वी आर omnivores. So if we are omnivores, then we do not only consume the green plants, but we consume meat also, right? Yeah, that is right, Shreya. Auto means self and trophos means nourishment. We are moving towards that, right? Now we have living organisms reproduce and respond to environment. Now they reproduce. They have their young ones. Like human beings have their young ones. Your parents have you and you will have some young ones after a decade or something, right? तो इसके बाद ये चीज़ होती है कि हर एक जो पेरेंट जनरेशन होती है, हर पेरेंट जनरेशन का कोई ना कोई यंग वन होता है. ठीक है ना. सो वी हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. हमारे पास एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस, टू मेक आवर जनरेशन. ठीक है, हमारी जनरेशन को बनाए रखने के लिए वी हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ we respire and excrete. We also respire. How we respire? We take oxygen, we inhale oxygen and exhale CO2, carbon dioxide. So this is how we respire. All animals respire this way, but the excretion part is different one. ठीक है, अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से excretion परफॉर्म करते हैं, right? They have different chemical composition in their excretory substance. ठीक है, अलग अलग होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसको, right? Yes, Shreya, you are right. Hetero means other and nourishment. Trophos means nourishment. That is, we are dependent on others for our nourishment, right? Now we have next thing as mode of nutrition. अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की बातें क्लियर हुई. What is nutrition? What is the importance of nutrition? And how living organisms are surviving due to nutrition? ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? जीत आर यू हियर? समझ में आ रही हैं चीजें? जीत एंड तेजस, क्लियर्ड विद द कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे बढ़े हम. गुड. नाउ वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हियर. So mode of nutrition, it means that we obtain nutrition in the form of on the 2 bases. First we have autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Now what is mean by autotrophs? So auto means self here. Auto means self, right? It means that any organism, any living organism which is creating their own food by their own way. So this is only possible with the green plants. ये सीन तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के साथ ही पॉसिबल है ना.
सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हु कैन गेट देयर फूड बाय देयर ओन, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दे गेट नॉरिशमेंट बाय देयर ओन. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? वी हैव द इनपुट एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट, एंड वी गेट glucose प्लस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ये बात समझ रहे हो आप लोग? the green plants take carbon dioxide and water and give glucose and oxygen as the product. The oxygen we inhale, right? This oxygen is used for inhaling. We inhale this oxygen and this glucose is stored in their leaves in the form of स्टार्च. ठीक है, उनके लीव्स में क्या होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है. दिस ग्लूकोज गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीव्स, राइट, एंड हेंस दिस इज यूटिलाइज्ड इन द अदर पार्ट बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, उन प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स पे भी क्या होता है? वो यूटिलाइज हो जाता है. नाउ द सेकेंड मोड इज हेटेरोट्रॉफ्स, which means that other like animals, human beings and decomposers along with scavengers, right? So they are dependent on these green plants for their food and nourishment, right? So they are dependent on them. Why? Because however they are consuming the green plants, right? They are consuming the green plants as well as the animals. So here animals as well as the human beings, they are dependent on green plants for their nourishment, for their nutrition. Wow, Jeet, you got a comeback. Good. क्या ही अच्छे से आ रहे हो, मतलब कितने खुश हो. हाँ, डॉन आया है क्या? ठीक है जीत, अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, एंड वी आर हियर विद द टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर, राइट? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड तो मुझसे पूछ सकते हो. जीत, ये वीडियो जो है आपके एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है. यू गो देयर एंड जस्ट चेक आउट व्हाट आई टॉट अर्लियर, राइट? अभी नहीं, इस क्लास के बाद. Finally, we are moving forward. Now we have the definition with the autotrophs. Please read it carefully. Auto means self and trophos means nutrition. It means that plants are called autotrophs because they make their food themselves. So there is a question, why plants are called autotrophs, right? So plants are called autotrophs because they make their food by their own, right? The making of the food themselves is known as autotrophic nutrition, and it is found in green plants. If the autotrophs prepare their own food by utilizing chemical energy, then they are called chemoautotrophs. Now, see, the plants not only utilize this carbon dioxide and water, but they utilize light energy along with the chlorophyll present in the green leaves. So we have CO2, we have H2O, we have light energy, we have chlorophyll. Now all these four components are combining and giving us glucose along with oxygen. ठीक है ये बात? So here Shreya, we are with the definition of autotrophs and heterotrophs. I was just with the previous slide with this pattern, right? मैं अभी यहाँ पर थी ना. I just told you some introduction for the autotrophic and heterotrophic nutrition. Now I am explaining this one by one. ठीक है, एक एक करके अब हम इसे समझते जाएंगे. So this is the first part for the autotrophs. So here I told that plants not only take
carbon dioxide and water, but they also require the light energy and chlorophyll. Now instead of this light energy, if they are preparing food using chemical energy, then they will be known as chemo-autotrophs, right? Unless they will be known as autotrophic nutrition, right? दैट्स गुड जीत, अगर ये जानते हो तो बहुत अच्छी बात है. ये सब आपका रिवाइज ही हो रहा है, ठीक है. यू हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स अर्लियर एज वेल, सो नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस केयरफुली, राइट. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी बर्डन, ठीक है ना. गुड. नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एज हेटेरोट्रॉफ्स. So hetero means others and trophos means nutrition, yeah, nourishment. It means that when organisms are dependent on others for their food and nutrition, then this kind of scenario is known as heterotrophic nutrition. Now animals cannot make their food themselves, so they have to depend on plants for their food, right? So इसका अगर हम एक तरीके से एक chain बनाएं, so we have green plants, right? We have green plants. Now green plants are consumed by herbivores, right? Green plants are consumed by herbivores, right? Now who consumes herbivores? Now who consumes herbivores? Any guesses? बताओ मुझे जल्दी से. That is good, Shreya. You are right. In the heterotrophic nutrition, animals are dependent on the others for their food. ठीक है ना? Good. That is herbivore, right? Yeah, herbivore is a consumer, Shreya. Good. अब मुझे ये बताओ कि who will consume herbivores? Who will now consume herbivores? What is the next level here? Carnivore. That is right. Now carnivores would be consuming these herbivores, right? Now what are omnivores? What are omnivores? बताइए omnivores क्या है? What are omnivores? Who are omnivores? Which are consuming both? Very good. Which are consuming green plants as well as the herbivores, right? Which are consuming green plants as well as herbivores. So we have omnivores here, which are consuming both, right? Now who are decomposers? Who are decomposers? Who are dependent on the dead organic material of green plants and the consumers, right? That's right, Tejas. with dead body जो खाते हैं, which eat up the dead bodies of plants as well as animals, उन्हें हम क्या कहेंगे? Decomposers कहेंगे. So we have at the last level we are having decomposers which eat up all of the green plants as well as the consumers. These are the consumers, right? Who are consumers? Herbivores, omnivores and carnivores along with the decomposers. Decomposers are also consumers, right? They are dependent on the green plants as well as the animals. Right? So have you understood this chain? What is the term for the interlinking between these green plants and consumers? पता है आपको? क्या कहेंगे? क्या टर्म है उसके लिए? That is right. That is food chain, Shreya. Good. That is food chain. Right. Now, if we have many food chain in the environment, if we have many food chains in the environment, so what will be the term for many food chains? क्या term होगा वहाँ पर? Good, Atharv. That is food web. Very good. Which is food web. Now, if we are having more than one food chain existing in the environment, then that will be termed as food web. ठीक है ये बात? Clear हुआ सबको? ठीक है,
तो अगर मैं बोलूँ what are animals, so animals are heterotrophs. What are plants, so plants are autotrophs, right? ठीक है. Now we have the process of photosynthesis. Now what is photosynthesis here? Guess this. We have a process of photosynthesis. Let's understand this. We have light energy here, right? We have light energy here from the sunlight, which is a natural source. Now we are having carbon dioxide, which is free in the atmosphere. We have water, which is present in the roots. Now this water will be carried out to the different part of the plants. First of all in the leaves. ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो पानी जो है वो जाएगा लीव्स में. That is right, Saksham. Photosynthesis is nothing but the food making process of plants. ठीक है, plants इससे अपना food खुद prepare करेंगे by the process of photosynthesis. Now we have water present in the underground level and these roots are absorbing this water. Now there are two components here. आप ये समझिए सबसे पहले. We have two components, xylem and phloem. Any guesses about xylem and phloem? Anyone who knows about xylem and phloem? Yes, Shreya, xylem carries water from tip of the roots, from the roots to tip of the plant, right? Yes, we have xylem which carry water, right? Now this water is present in the form of underground level. This water is existing in the underground level, right? Now these roots are reaching to that underground water and here we have xylem as the first component. What is its task? Its task is to absorb this water and go to the top of this leaf. ठीक है, इस leaf तक इस पानी को पहुंचाना है. Now the leaf has carbon dioxide, the leaf has light energy, right? And the leaf has water itself. ठीक है, इसके अलावा the green part, this green part is actually chlorophyll. This green part is actually chlorophyll. Now this chlorophyll along with carbon dioxide, water and sunlight giving oxygen and glucose as the product, right? Anyone with the chemical formula of glucose? कोई जानता है chemical formula glucose का? Anyone with the chemical formula for glucose? Yes, Shreya, you are right. Phloem transfers organic nutrient, right? Anyone with the formula of glucose? This is CO2, carbon dioxide, Saksham. I am asking about glucose. Yes, that is right, Shreya. Very good. This is C6H12O6. Earlier in the acid, base and salt, I told you, right? वहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे acids, bases and salts, then there I told you about this formula, right? So CO2 plus H2O is actually constituting together, Saksham. So we have here CO2. We have here CO2, carbon dioxide, then we have water here, H2O, and now with the help of light and chlorophyll, they are constituting, making the glucose. So glucose is C6H12O6 along with water, or we can say oxygen. Mention oxygen here. So this is O2 along with water droplets. Water droplets भी कुछ amount में create करेंगे. But we have raw materials as carbon dioxide and water. We have glucose and oxygen as the products. What are the essential requirements here? So essential requirements are light energy and chlorophyll. ठीक है ये बात? सबको ये बात clear हुई? Now what is the task of phloem? So phloem has a task.
whatever the food is being made here, right? Food is being made in the leaves. जैसे ही leaves में खाना बन गया, right? जैसे ही leaves में खाना बन गया है, so that phloem will be attentive. phloem को पता चल गया, अरे खाना बन गया है. Now phloem will carry that food to different parts of the plants. ठीक है, phloem क्या करेगा? उस food को लेगा और प्लांट के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाएगा. जैसे कि रूट्स पे लेके जाएगा, स्टेम पे लेके जाएगा, इट विल गो टू द फ्लावर्स, इट विल गो टू द फ्रूट्स एंड अदर लीव्स एज वेल. ठीक है ये बात. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली, राइट. वी हैव फ्लोएम which carries food or starch to other parts of plant. Right, if you want to note down this chemical equation, then you can note it down. Also you can make a rough diagram. Also you can mention the task of xylem and phloem, which are two components of the plants. Please note it down, and if anyone have any query, so he can or she can ask me. Yes, Shreya, I'm coming up there with the chloroplast. Chlorophyll is actually stored within the chloroplast, right? Okay, everyone noted, right? It's okay, Shreya. I know Jeet is also getting same problem. He just pinged okay one time and it is like repeated by many times, right? ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं. We have the process that exclusively takes place in the chloroplast through chlorophyll. Now this process takes place within the chloroplast. The chloroplasts contain chlorophyll, right? Now if you are asked that where the chlorophylls exist or where does the chlorophyll contain, so chlorophylls are contained within the chloroplasts, right? Now all green plants and few other autotrophic organisms utilize photosynthesis. They use carbon dioxide, water and sunlight. Now what are the raw materials here? We have raw materials, carbon dioxide, water and sunlight. Now the byproduct is oxygen. ठीक है ना? Now this glucose, which is the food made in the leaves, made within the leaves of the plants, is produced in this process, is used for the cellular activities. Now whatever food we take, ठीक है, animals utilize that food in the form of nutrients, in the form of energy. Now the plants have cellular activities same as human beings. हमारे पास cellular activities तो नहीं है, but we have some activities, right? दिन भर की एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते भागते रहते हैं, so that we need energy. In the similar way the plants need energy, and that energy is provided by this glucose. ठीक है ना? Yeah, Shreya, you can. Shut up, Jeet. Don't pass a joke. Yes, Shreya, you can. Photosynthesis maintains the balance between oxygen and CO2 in the atmosphere. That's right, Shreya. How many molecules of carbon dioxide are being utilized?
that only that only is converted to the oxygen, right? If it is utilizing 6 molecules of carbon dioxide, then it is producing 6 molecules of oxygen, right? So this is how it maintains a balance, ठीक है ना? आप आगे जाके बैलेंसिंग रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी, right? Now we have this thing. Leaves contain microscopic cellular organelles known as chloroplasts, and each chloroplast contains a green colored pigment chlorophyll. Now please note these two statements. Note these two statements down. First two statements should be noted down to your notebook, so that when you will be having your test, there you will get these statements in the form of MCQs, right? हमें MCQ भी तो आगे solve करना है. Okay, all of you noted it down? Fine. Now we have next topic here. We have importance of photosynthesis. Now for the existence of all life on earth, what does that mean? Actually on the plants we are dependent for food, right? So if plants are existing, then only the human being and other consumers will be existing, ठीक है? अगर plants रहेंगे तो ही हम रहेंगे, right? So there are plants very important, and for those plants the process of photosynthesis is very important. Why? Because plants can only survive by their food, and their food is made by the process of photosynthesis, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत important है. Now they serve crucial role in the food chain. Now the food chain is balanced here. The green plants are producers in the food chain, right? The green plants are producers in the food chain, and we are consumers. The herbivores, carnivores, omnivores, along with the decomposers, we are consumers. Now we all are dependent on these producers. So if there are no producers, then how would these consumer would survive? ठीक है, ये consumers कैसे survive करेंगे अगर यहाँ पर producers नहीं होंगे तो? So that they maintain a balance between the food chain, and if there is food chain, then there will be existing as food web. ठीक है ना, food web भी exist करेगी. The plants create their food using this process, which is responsible for the production of oxygen. So we get oxygen to inhale from plants only, and plants give oxygen as the byproduct of the process of photosynthesis. ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब वो photosynthesis perform करेंगे, then only we will get oxygen. So production of oxygen is only and only solely depends on the process of photosynthesis. Yes, that's right, Shreya. Guard cells maintain the opening and closing of stomata. Now what is a stomata here? So we have leaves here, and leaves have small pores here in which the process of photosynthesis takes place, and these small pores are known as stomata, right? And every stomata is protected around with a cell type structure. This is known as guard cell. This is known as guard cell, right? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? वी हैव समड अप विद द फोटोसिंथेसिस. हमारा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे एंड हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं. फाइन. अदिति, अदिति कुमारी, काजल,
Kajal, this is very first topic, right? We have completed with one chapter of chemistry. Now this is biology, but this is very first class of the biology. So you can get this, right? कहीं दिक्कत नहीं आएगी समझने में. Aditi Kumari, clear with this? Tejas is cleared with this. Thank you, Tejas. Now this session is very interactive, right? कितने अच्छे से आप लोग सब लोग ना आंसर कर रहे हो. That is very good. Especially Shreya, thank you so much for sharing many facts with us, right? इन facts के कारण ही मैं थोड़ी एक दो चीजें sum up कर लेती हूँ, ठीक है? Thank you so much. Yeah, Yuvraj, you are right. There is network issue with Jeet. Just because he is messaging for once and it is getting repeated after repeated. ठीक है, बहुत ज़्यादा repeat हो रहा है उसका message. It's okay, just avoid it. Now we have next thing here. Now this is the difference between photosynthesis and cellular respiration. So photosynthesis only takes place during daytime. So this process is during daytime. Right? Without light energy, photosynthesis is not possible. Without light energy and chlorophyll, they are the essential requirements. Although the plants are getting carbon dioxide and water, but if they do not have chlorophyll and light energy, they can't perform the process of photosynthesis. ठीक है ना? अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल भी जाए, H2O मिल भी जाए, बट अगर वहाँ पर लाइट एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा, ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, सो हाउ वुड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैसे होगी? सो वी हैव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम जस्ट बिकॉज द सनलाइट इज नेचुरली प्रेजेंट देयर, right? And we have cellular respiration. So cellular respiration takes place during the night time where they utilize the oxygen from the environment and exhale CO2 just as human being. बिल्कुल हमारी तरह क्या करेंगे? O2 लेंगे, O2 inhale करेंगे and CO2 exhale करेंगे, right? Both the processes are same, but here this photosynthesis is process of making food, but cellular respiration is the respiratory process of plants. ठीक है ना? दोनों में difference है. Right? Now we have next thing, necessary conditions for photosynthesis. So please note this down, right? इसे note कर लीजिए please. Necessary conditions for photosynthesis. First is presence of sunlight. As I told you that without light energy, photosynthesis cannot take place. We have chlorophyll as the green pigment. Without chlorophyll, there will be no photosynthesis. Now we have presence of water here and presence of carbon dioxide. Done with this? Good, very good. Now we have next topic, photosynthesis in algae. So now photosynthesis can take place in algae also. Why? Because algae are green patches and they are also hence living organisms. Why? Because they are creating their own food. ठीक है, अपना food वो खुद create कर रहे हैं. That's why they are living organisms. So what are algae here? Green patches in the ponds and in stagnant water. देखा है कभी algae real life में? आपने बताओ, कभी real life में algae देखा है? Say yes or no. Yeah, they are slippery suction. You are right. Yeah, that's right, Shreya. Fungi shares the food made by algae.
दिस इज व्हाट वी कॉल सिम्बायोसिस, है ना। हम आगे देखेंगे, सिम्बायोटिक लाइफ देखेंगे, वहां मैं डिस्कस करूंगी इस चीज को। नाउ वी हैव synthesis of plant food other than carbohydrate. So not only they synthesize carbohydrates, actually carbohydrate means glucose, right? जो ग्लूकोज वहां पर क्रिएट हो रहा था, the glucose which was formed during the process of photosynthesis is itself the carbohydrate. So they don't only सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं, बल्कि दे आर ऑल्सो सिंथेसाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो नाउ प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब ये समझिए, वी हैव प्लांट हियर, राइट? दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, राइट? सो इन द रूट्स ऑफ द प्लांट वी हैव अ नाइट्रोजीनस बैक्टीरिया. We have a nitrogenous bacteria, right? Now this is known as rhizobium. This is known as rhizobium, right? Good Saksham, this is rhizobium, ठीक है ना? So what does rhizobium do? So rhizobium actually converts atmospheric nitrogen. Here we have nitrogen, right? Here we have nitrogen in the environment. So actually it converts this atmospheric nitrogen to the form which can be consumed by the plant. ठीक है, ऐसे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिससे प्लांट्स उसको क्या कर सके, कंज्यूम कर सकें. ठीक है, देखो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है. ठीक है, ऐसी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं इन द एटमॉस्फेयर, राइट. सो प्लांट्स कैन just absorb every gases but not the atmospheric nitrogen. ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली. तो होता क्या है, वी हैव एसिड रेन, राइट. हमने एसिड रेन पढ़ा था ना, यस और नो? वी डिड अंडरस्टैंड एसिड रेन इन लास्ट लेक्चर, राइट. हमने देखा था एसिड रेन में. यस जीत, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? I was just involved in this na, so that, yeah, that's right Shreya, acid rain turns acidic, right. So acid rain actually contains nitric acid. This is nitric acid, right. हमने देखा भी था, जब ये नाइट्रोजन CO2 के कांटेक्ट में आ जाएगी या वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी, देन ओनली देयर विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मिंग हियर. ठीक है, जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, व्हेन वी हैव दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, सो नाउ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज कमिंग टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड द अर्थ सॉइल एक्चुअली एब्जॉर्ब्स दिस नाइट्रिक एसिड. और उसके बाद ये राइजोबियम को इंडिकेट हो जाता है दैट नाइट्रिक एसिड आ गया है अभी अर्थ के अंदर. अर्थ ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड एब्जॉर्ब कर लिया है. सो दैट राइजोबियम कन्वर्ट्स नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर सकें. ठीक है ये बात. जीत एक बार और बोल दो क्या कहना चाह रहे थे. अच्छा मैं अभी देख लेती हूँ, चलो बोल दो. अच्छा एक बार बोल दो. नहीं अब बोल दो जीत, बोल दो ना प्लीज 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 बोल दो. सॉरी मैं क्या ऐसा पढ़ा रही थी ना, मैं भूल गई आपकी कमेंट देखना. सो सॉरी. अच्छा बोल दो, अच्छा भी बोल दो, नाराज मत हो जीत, रहन दो. ऐसे कैसे नहीं जीत बता दो प्लीज. क्या चला गया, क्या हो गया? Okay, you are living in Odisha and there is like तूफान ना, यास तूफान है वहां पर, इसके कारण नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, ये कह रहे हो? I know you are having network issue जीत.
Yeah, Shreya, that's right. We are suffering with a lot of technical issues right now. ठीक है. When I was trying to connect with you ना with this for this lecture for this science lecture, then only there was the issue. ठीक है, वहाँ पर भी यही इशू हो रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रही थी क्लास. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इशू हो रहा है. इट्स ओके बिकॉज दिस इज द रिकॉर्डेड वीडियो. ठीक है, वहाँ पर जाके आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा. दिस इज लाइव एंड दिस विल गेट रिकॉर्डेड बाय डिफॉल्ट. तो वहाँ पर एक बार आप उसको रिज्यूम करके देख सकते हो. ठीक है, इट्स ओके. Okay, plant has special structure hostorium on which it climbs for absorption of ready-made. Fine. ठीक है, ये फैक्ट मुझे भी नहीं पता था. I will check this fact and will let you know, right? Hostorium ना, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैं भी एक बार देख के बताऊंगी. Fine. So we have here Rhizobium, which is the nitrogenous bacteria. Now it consumes and absorbs the nitrogen which is present in the acid rain, ठीक है, in the nitric acid, and converts in the nitrogenous substance so that plants can consume. ठीक है ना, प्लांट्स की कंज्यूम करने के लिए वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं ले सकते हैं. ठीक है, ये बात. That's why plants get nitrogen from soil. So we have here the rhizobium, which is present in the soil, and they convert gaseous nitrogen into usable form, release into the soil. Now please note down this. Please note down this statement along with this statement. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. इस प्रोसेस को जो हम ये पढ़ रहे थे राइजोबियम के बारे में, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ दिस इज ऑब्जर्व्ड इन दी प्लांट्स लाइक पीज एंड मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूम्स. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. प्लीज नोट डाउन दीज टू स्टेटमेंट्स. दिस विल बी डेफिनेटली बीइंग आस्क्ड यू इन दी फोर्टनाइटली टेस्ट. आगे आपका टेस्ट आएगा जहां पर आपको सिंपल इक्वेशंस आएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आएगा. एक चैप्टर हम और करेंगे सोशल साइंस में, इनसाइड अवर अर्थ. दैट वुड बी आस्क्ड इन दैट टेस्ट. ठीक है, तो अभी से उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो. I think Jeet has got disconnected due to network issue, right? देखो, चालाकी मत करना, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेना, इसे लिख लेना नोटबुक में, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ही पढ़ते रह जाओगे सारे लोग. Now we have this thing, mode of nutrition in non-green plants. So now non-green plants lack the chlorophyll, है ना. Non-green plants के पास क्या नहीं होगा? They will lack chlorophyll. Non-green plants lack chlorophyll. Now if they don't have chlorophyll, so how will they conduct the process of photosynthesis? कैसे perform करेंगे photosynthesis? तो non-green plants में photosynthesis नहीं होगा. Why? Because they lack chlorophyll, the green pigment, right? Now if they cannot make their own food, so we have an example that is parasite. Now parasite is a heterotroph. So non-green plants are heterotrophs, right? Now दी नॉन ग्रीन प्लांट्स में अगर हम जैसे देखें फंगई और एल्गेई, ठीक है. सो फंगई और एल्गेई, इन विच एल्गेई इज ग्रीन प्लांट. सो फंगई इज डिपेंडेंट ऑन दैट एल्गेई सो दैट इट मे रिसीव दी फूड मेड बाय एल्गेई. ठीक है ना, किस पे डिपेंडेंट है फंगाई? एल्गेई पे डिपेंडेंट है. तो एल्गेई जब फूड बनाएगा सो दैट फंगाई विल गेट दी फूड, राइट. तो इस तरीके से क्या करेंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे. मशरूम इज नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल. ठीक है, वो दोनों ही नहीं है, प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है. ठीक है, इट इज ओनली अ बैक्टीरिया. सॉरी, मशरूम इज फंगाई. ठीक है, मशरूम क्या फंगाई है. ओके, या दैट इज सेपरेट टॉपिक, राइट. या कस्क्यूटा, that's right. I'm moving on this. Now we have the organism to which the parasite latches onto is called host. Now there is a host on which parasite is dependent.
ठीक है, ये पैरासाइट क्या कर रहा है, इस होस्ट पे डिपेंड कर रहा है फॉर फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर न्यूट्रिशन, राइट. Now we have here two examples, Cuscuta and Orobanche ramosa. Please note down these two examples here. Banyan is the host and Cuscuta is the parasite. So Cuscuta lives on the banyan tree and it is getting nutrition from the banyan tree, right? So Cuscuta is a parasite and banyan is the host. Please note down these two examples for ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको? या दैट्स राइट श्रेया. Few fungi are total parasite like mistletoe. That is right. Okay, please, if you are viewing that chat box, please note down this statement. Total parasite का एक example note कर लेना, mistletoe, which Shreya has told us. Fine Shreya, very good. Now we have insectivorous plants. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे conclude करते हैं. We have done with the nutrition. Why nutrition is important, what is the process of photosynthesis, modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutrition, and also the nutrition in non-green plants. ठीक है, इतनी चीज़ें आज हमने कर ली हैं. I have a task for you. Please go through these statements again. एक बार हो सके तो इस वीडियो को फिर से देखना. whatever statements you are finding new, ठीक है, कोई भी नया स्टेटमेंट मिलता है तो प्लीज़ note it down in that notebook. ठीक है, और इसको आप तैयार करके रखना, बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर अलॉन्ग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन. ठीक है, तो ओलंपियाड वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, अंटिल देन प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और उससे भी ज़्यादा मैथ्स का होमवर्क भेज देना. ठीक है, कब भेजोगे मुझे मैथ्स का होमवर्क? मंडे इवनिंग 6. अब देखो कल संडे, प्लीज़ उसको वो मत करना. ठीक है, गड़बड़ मत करना, ये होमवर्क मुझे भेज देना. ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो वो आप मुझे भी भेज सकते हो. ठीक, आई हैव एडेड अदिति कुमारी राइट नाउ इन माय व्हाट्सएप चैट. प्लीज़ अदिति कुमारी, फाइंड इट हेल्पफुल. ठीक है ना, एक बार उसे देख लेना प्लीज़. बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच. Tejas, please get my number from admission department and join me over WhatsApp, right? You can send me their homework. Your homework you can send me there, right? अगर आप मान लो WhatsApp पे ऐड नहीं हो रहे हो, so you can get a portal over the website, over the app. वहाँ पर आप अपना होमवर्क पोस्ट कर देना. I will find that. ठीक है, मुझे वो अपने आप मिल जाता है. Thank you so much. काजल, आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो चेक करना आज के मैथ सेशन की. देयर आई हैव गिवन होमवर्क.
प्लीज़ फाइंड दैट वीडियो इन दी ऐप ओनली, ठीक है, वहाँ पर आप अपने ऐप में जाना, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको एक बार गो थ्रू करना, उसमें होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डू दैट होमवर्क एंड सेंड मी बाय मंडे 6 PM ओवर वेबसाइट और दी ऐप, ठीक है। और नहीं तो आप एडमिशन डिपार्टमेंट से मैं नंबर ले सकते हैं, यू कैन ज्वाइन मी ओवर व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।